Okay, so start writing. WPE, work per energy. Okay. First, we'll start with dot product or scalar product. Scalar product. We have done it before also, but we'll do it once again today. Scalar product. Scalar product means it is of two vectors. If you don't understand anything in between, or if you feel that you have heard this word for the first time, stop and ask. Okay. Fine. Two vectors. Two vectors are A and B. Their scalar product is called dot, is also called dot product, denoted by A dot B is equal to mod A mod B cos theta. Okay. Mod A mod B cos theta, where you make this vector A, you make this vector B, and theta is the angle between them. Okay. Fine. Now, see, let's हाँ बोलो. Expander मतलब ये तुमको ये बड़ा चाहिए. हाँ ठीक है. Okay. Thing is that if your vector A, so you know what, dot product gives you what is multiplied, the magnitude of A is multiplied, the magnitude of B is multiplied, and the cos of the angle between them is multiplied. Okay, let us see what is some cos values. If you want to understand what are cos values, just make a graph of cos. The graph of cos versus theta, cos theta versus theta is like this. Okay, नहीं मैं अच्छे से बना देता हूँ. This is, so on the x-axis there is theta, so theta 0 degree. This theta is 90 degree. Okay, and this theta is 180 degree. So cos 0 is, and this is y value is 1. Y value is यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है 0. So what is cos of 0 degree? 1, right? Cos, where is cos 0? 0 यहाँ है ना, 1. Understood? Cos 90 degree 0. Cos 180 degree -1. Very good. Cos of 90 degree is 0. Cos of 180 degree is -1. In between values बताओ. Cos 30 degree कितना होता है? √3/2. Is that correct, Aditi? Yes, sir. And you speak loudly, okay? Okay, sir. Or far away. And Priyal, you too. Okay, if the theta angle is acute, its cause is, if the angle is acute angle, मतलब यहाँ से यहाँ तक. So cos value is 0 to 1, so it's positive. Rico, if angle is acute, its cause is positive. Cos की spelling COS है, CAUSC नहीं है. Okay. Cause of, Harshal, protein खाना है? Protein. Cause of acute is equal to positive. Cause of obtuse is equal to negative, right? So if I tell you that the cos product of two vectors is a positive number, what can you conclude about them? They are at acute angle, okay? And if the cos product is negative, then they are obtuse to each other. Yes. ठीक है. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर नेगेटिव हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता. वेक्टर ने वहां पे मॉड लगा ना, ये मॉड है मॉड भी. ठीक है. अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा 3i इज पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, और 3 -3i वेक्टर कुछ होता ही नहीं है. पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता.
डायरेक्शन की वजह से तो नहीं होता। मैं तुमको बोले नॉर्थ पॉजिटिव है क्या, ऐसा नहीं होता ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड यू कैन से दैट वेदर समथिंग सा मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर नंबर यू कैन से समथिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कांट से अ डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ पता है, ठीक है। क्या है, क्या बोला मैंने? विक्रमादित्य कीप योर वीडियो ऑन। दैट एस, हाँ 3i इज नॉट अ पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव बोलना ही गलत है, इट्स जस्ट अ वेक्टर directing in the positive x direction. Okay, if you, because if you start saying that 3i is positive and minus 3i is negative, tomorrow you will say 3i is greater than minus 3i, right? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, वेक्टर्स यू कांट कंपेयर। ओके, is 2i greater than less than 3i? No, the magnitude of 2i is less than magnitude of 3i. Okay, good. Okay, okay, now so what does, so see, suppose there are two vectors. So this is a y-axis, x-axis. One vector is acting towards the x-axis, its magnitude is 10. Okay, and when vector is acting towards the plus y, its magnitude is 10. And this is a vector and this is b vector. What is a dot b? Batao. Bolo. Mod a mod b cos 90 कितना होगा? 0, right? 0. If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. लिखो, if two vectors are perpendicular, their dot product is 0. Now tell me, common sense, use common sense. 3i dot 4j is equal to what? Sir, 12 Bull. It will be 0. Why? 0 आएगा. Because 3i is in the plus x and 4j is in the plus y. Both are perpendicular. Okay. What about 3i dot 4k? Sir, 0. वैसे तुम बोल सही रहे हो 3 into 4, पर तुम cos पूरा नहीं कर रहे हो। cos ऑफ कितना है उसके बाद? 90। तो तू बोल सही रहा है, 3 into 4 into cos 90 है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ भी, एनीथिंग ऑफ i डॉट एनीथिंग ऑफ j इज इक्वल टू 0। अंदर देखने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज इनसाइड। ओके, अंडरस्टूड? यस, जोर से बोलो। हाँ, के भी परपेंडिकुलर होता है ना, बिकॉज के इज आउटसाइड दिस प्लेन, के इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन। देखो, ये देखो इधर, is the black pen perpendicular to the yellow pen? Is the yellow pen perpendicular to the white pen? Is the white pen perpendicular to the black pen? Okay, all three are, all ijk are perpendicular to each other. Yeah, I can give you, I'll give you, wait a minute. 3i dot 3i. Where? Chichi man, Chichi. 3i dot 3i. Give me correct answer. Just 9. Why? Because as a 3 into 3 into, what is the angle between 3i and 3i? See, 3i is like this, 3i is like this. So angle between them is 0. So it is cos 0, and cos 0 degree is 1. So it is just 9. Understood? 3i, 3i किस डायरेक्शन में? ऐसे डायरेक्शन में। ठीक, ये दूसरा 3i भी इसी डायरेक्शन में। Yes, sir. इन दोनों एरो के बीच में एंगल, हाउ मच इज द एंगल? But why are you measuring the angle? Is that the formula? कि बिकॉज अब दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, a डॉट b is equal to mod of magnitude of first, magnitude of second into the angle between them, cos of the angle between them. इधर देखो, इधर स्क्रीन। Okay. Understood? So what is the angle between two vectors which are in the same line? 0. 0. That's why it is cos 0 degree. And cos 0 degree is how much? Cos 0 degree is 1. Therefore, it is 9 into 9, 3 into 3 into 1. एक मिनट, एक खत्म हो जाए, इसको खत्म हो जाए तो cos, समझ में आया क्या ये? Yes, sir. हाँ, अब तुम पूछ रहे हो why are you taking cos, why not sin? sin लेके कुछ और आएगा।
यू विल कॉल इट समथिंग, आएगा वो आएगा, ठीक है। हाँ वेक्टर प्रोडक्ट में साइन आता है, ठीक है। देखेंगे 3i डॉट 4i कितना आंसर आएगा? 12, जस्ट 12 नो। तो अगर i डॉट आई है तो उसको इग्नोर मार दो, और i डॉट जे है तो उसको 0 कर दो। अब बताओ मुझे i डॉट आई कितना है? 1 इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ठीक है। ये अंडरस्टूड नो। व्हाट अबाउट i डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू, बोलो अपने आप, के डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। दूसरा एक चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि ब्लू वेक्टर है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऑरेंज वेक्टर जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये भी 45 बीच में है, 45 डिग्री पे, और ये वाला भी ऑरेंज भी 45 डिग्री है बीच में। तो ये क्या दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट भी 0 होगा। इट्स नॉट जस्ट आई, एनीथिंग इन आई एंड एनीथिंग इन जे इज 0, एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। ओके, समझ में आ गया? जी हाँ, नहीं और भी हो सकते हैं ना, भी करेंगे, ठीक है, और भी हो सकते हैं, देखो। ओके, नेक्स्ट इज इफ यू हैव अ वेक्टर लाइक 2i प्लस 3j। ओके, सब पहले तो मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। जैसे 2i प्लस 2j लिखो, डॉट लिखो 2i माइनस 2j, और इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। इसको खोल देंगे, पहले अपन खोल देंगे, खोलेंगे तो क्या आएगा, ये 2i किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2i, तो 2i डॉट 2i माइनस 2j प्लस, फिर समझ में आ रहा है ना, देखो ये 2i मल्टीप्लाई हुआ है दोनों से, ठीक। एंड देन दिस 2j विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस, सो 2j डॉट 2i माइनस 2j। इतना समझ में आ रहा है? हेलो, डिस्ट्रीब्यूशन किया है बस, ग्रेड 6 में जैसे करते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। रूटीन, ठीक है। आंसर इज 0 नो। अच्छा, 2i डॉट 2i कितना आया? 4 आया। फिर 2i डॉट माइनस 2j, 4 माइनस, वेरी गुड। फिर प्लस 0 माइनस 4। समझ में आया सबको? किसको नहीं आया पूछो। आंसर आएगा 0, 0 आएगा। ये होता है पेन पेपर से करना, क्या बोलते हैं इसके, स्केलर प्रोडक्ट किया है। एक होता है दिमाग से करना, दिमाग से तो कैसे करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हाउ इज 2i प्लस 2j लुकिंग, 2i प्लस 2j, सो x में 2, y में 2, इट लैंड एट विच पॉइंट, 2, स्टार्ट फ्रॉम 0,0 एंड एंड एट 2,2। इसका एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल 45 45, ठीक। वैसे ही इफ यू मेक, सो दिस वाज 2i प्लस 2j राइट, एंड देन इफ यू मेक 2i माइनस 2j, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 एंड एंड एट 2 माइनस 2, राइट। इसका भी ये दोनों 45 45। तो इसको, हाँ, अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, इसका इसका एक बेस कितना है 2, लेंथ कितना है 2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√2। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√2। तो पहले लिखेंगे 2√2, सॉरी 2√2 इंटू 2√2 इंटू कॉज ऑफ 90। अंडरस्टूड? वैसे करने की जरूरत नहीं थी, इफ यू ऑलरेडी रियलाइज कि एंगल 90 है तो आंसर डायरेक्टली 0 ही लिख दो, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस मेथड, बट आई आल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड कि you can always graph and find the magnitudes and then find the angle between them and do it nicely. Okay, ठीक है, okay, fine. Now cost product is very nice. Why it is very nice, I'll tell you. Why are we studying cost product? Cost product इसलिए यूज करते हैं, you know how to find vector. I'll tell you a good application. देखो, तुम लोग ने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है, क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है,
ये एक मॉलिक्यूल है जिस जो CH4 मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है ना, टेट्राहेड्रन बोलते हैं ना। तो किसी ने बोल दिया ना ये एंगल निकालो, तुमने पढ़ा है कितना है ये 109 डिग्री 28 मिनट, यही है ना। तुम इसको निकाल भी सकते हो, थोड़ा मैथ है, बट इट इज कॉस्ट प्रोडक्ट ओनली। देखो what is the property of this tetragon, ये tetrahedron, that all side everything is equal, no, it is symmetrical, ठीक है। So is this an equilateral triangle of side A, right? This is also an equilateral triangle of side A, ये भी side A का है, ठीक है। अब तुम अगर इसको equilateral triangle बोलो तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा अभी, ठीक है, बट तुम इसको रिकॉर्डिंग सुन के बाद से देख सकते हो कि on a I think I forgot, 1 second. On a plane, if this is 0 comma 0, this is a comma 0, then this point is a by 2 comma a by 2, x पे a by 2 और y पे ये a by 2, ये a by 2, ये 60 डिग्री और ये a है, तो a का साइन 60, तो a रूट 3 by 2, दिस पॉइंट इज a रूट 3 by 2, ठीक है। और दिस yeah, and this point therefore the highest point is the midpoint of this, no, इसका x coordinate is a by 2, y coordinate is a by 2, x is second, a by 2 कॉमा हाइट पे ये होगा, इसका ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये होगा 2:1 पे, this whole distance was root 3 a by 2 into 1 by 3. So this distance, this y coordinate is, this point's y coordinate, x is a by 2, y is root 3 a by 2 into 1 by 3, and z is something I don't know. Leave it. See, I'll tell you the concept, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। होता क्या है, you can write vectors, okay, you know the coordinate, right? So this vector, from this vector is जैसे ai, it is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. You can also write this vector, which is a by 2 minus 0 I cap plus a root 3 by 2 minus 0 j cap and 0 k cap. You can write this vector also, ठीक है। And then what you can do, suppose you wanted the angle of, ये c है ना, और ये है ना, C is the midpoint, right, of these 4 points. So the moment, see, I was not getting the coordinate of this point, right, very easily. But the moment you get coordinate of this point, the C is the midpoint of these 4 points. Yeah. So you can find x1 plus, इसका coordinate कैसे निकाल सकते हैं, x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4, yeah. Right? तो जैसे coordinate मिल गया, जैसे coordinate मिल गया ना, जैसे ही y का coordinate भी मिल जाएगा, y sum of y by 4, इसका y plus y plus y plus y by 4. ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा x नॉट y नॉट z नॉट, जैसे ये मिला तुम ये वेक्टर निकाल सकते हो, यस और नो। एंड द मोमेंट यू गेट दिस वेक्टर यू आर डन, बिकॉज सी you have this vector, you have this vector as well, right? And you just take dot product of them, you will get the cos, okay? So you will get this angle, fine. Once you get this angle, you can get this angle also, और ये angle कितना होता है, ज्योमेट्री से निकाल सकते हो फिर तो ये बोल, ओके, ऐसे निकलते हैं एंगल्स। मैं तुमको एक करके दिखा देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब के बीच में तुम एंगल, पहले तो ऐसे सोचो, लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट्स से यू से वन इज 3i, लिखो वन इज 3i, अदर इज 2i plus 2j. So one vector a is equal to 3i, b is equal to 2i plus 2j. Find the angle, find angle between a vector and b vector, okay? ठीक है, okay? तो कैसे लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू mod a mod b cos थीटा
अब a डॉट b कितना है? 3i डॉट 2i प्लस 2j कितना है? नहीं ऐसे नहीं सोचो, पहले पहले नंबर से बोलो बस, मल्टीप्लीकेशन। 3i डॉट 2i कितना? 6 6 है ना, बस 6 आएगा ना लेफ्ट साइड, 6 आएगा, वेरी गुड। और अब बताओ मॉड है, इसका मॉड कितना है? मैग्नीट्यूड रूट 30 बोला क्या तुमने? नहीं, कैसे? 2i प्लस 2j है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा, a का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। b का मैग्नीट्यूड कितना है? b इज 2i प्लस 2j, तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 2 रूट 2 cos थीटा। समझ में आया? cos थीटा निकालो, यहां से कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 बाई रूट 2 आया, तो थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना 45 डिग्री? कॉमन सेंस से दिख रहा है ना, 2i प्लस 2j और 3i के बीच में। अंडरस्टूड? ऐसे एंगल निकालते हैं। वी टेक डॉट cos थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देयरफॉर इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय mod a mod b। ये फॉर्मूला है, बट यू नो हाउ टू डिराइव दिस, राइट? सॉरी, you understood this formula shaded in yellow, right? Angle between two vectors is equal to cos theta is equal to a dot b by mod a mod b। लिख लिया है? दोबारा लिखा है ऐसे जैसे बोला? हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बोलो। I said angle between two vectors is cos theta is equal to a dot b by mod a mod b। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सेस बनाओ, ठीक, और एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब है जिसका साइड ए है, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक, क्यूब ऑफ साइड ए, ये रखा है ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, अरे वाह, ठीक, ओके। अब ना मुझे इसके साइड, इसके ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओ हेलो, और ऑरेंज ब्राउन शर्ट, ये बोलो ए और डी का कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। डी का कोऑर्डिनेट बोलो। वाह वाह, क्या? जोर से बोल। 0,0,0। सी का क्या है? क्यूब ऑफ साइड ए है, क्यूब ऑफ साइड ए, a,0,0। ए का क्या होगा? 0,0, a। डी का क्या होगा? एक्स पे कितना है ये? एक्स पे ए है, वाई में कितना है? 0, जेड में कितना है? ए, a,0, है। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ये सुन, ठीक है। ई का कोऑर्डिनेट, हर्षल, ई का कोऑर्डिनेट सारे बोल दे, ई एफ जी एच। जोर से बोल, आवाज उस रूम तक जानी चाहिए आवाज। हाँ, x 0, a, वेरी गुड। and G will be f, there'll be A comma A. yeah, And G will be A comma A comma. very good। H is gonna be this one. A comma नहीं, रॉन्ग है, ए नहीं। 0, no, 0,0। Online people, do you have a doubt in this? हाँ, Priyal, your voice is breaking, ask again। Priyal, your voice is breaking, ask again। So can you hear me now? Yeah, I can hear you now। Oh, I didn't get it. The A comma 0. Like basically the coordinates. बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स, इस Yeah. क्यूब का साइड लेंथ a है, अगर x एक्सिस पे a जाओगे तो ये a पॉइंट है। ठीक है, हाँ.
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट देखो ए है, बिकॉज दे आर इन द एक्स प्लेन ऑफ ए. Oh, yes. If you go in the direction of z, your z coordinate increases by a. So if you see all these 4 points, their z coordinates are a. Yeah. And the backward 4 points, all their z coordinates are 0 because you're not moving in the z direction. Yeah. Okay, similarly, if you go like this, the all, the y coordinate becomes 0. So all these g, h, e, f, the y coordinates are a. Okay. And if you stay in this plane where y coordinate is 0, the 4 points d, c, b, a, the y coordinate is 0. Okay, Okay, got it. understood? ठीक है. Now you can ask the angle. जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, what is the angle between the body diagonals of the cube? लिखो, what is the angle between the body diagonals of the cube? ठीक है. So this cube has how many faces? 6 faces. Any diagonal on the face is called a face diagonal. And we pretty much know what is the angle between two diagonals on the face. Face is a square, right? तो स्क्वायर के डायगोनल्स में कितना एंगल होता है? 90, वो तो पता है. लेकिन बॉडी डायगोनल कौन सा होता है? बॉडी डायगोनल होता है क्या? बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल, मैंने मिर्ची नहीं खाई. बॉडी डायगोनल. ओके, बॉडी डायगोनल होता है जैसे डी एफ को ज्वाइन करने वाला बॉडी डायगोनल होता है. क्या होता है? डी एफ. और दूसरा कौन सा होगा? ई सी होगा, ए जी होगा और एच बी होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? कितने बॉडी डायगोनल आएंगे? 4 आएंगे. लिख लो कौन कौन से? ई सी, ए जी, बी एच, एन एफ डी. कौन कौन से हैं? बी एच, डी एफ, ई सी और ए जी. समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो इमेजिन करो इस कमरे को एक क्यूब, तो उस पॉइंट से जहां पे वो डस्टबिन है वहां से लेके वो पॉइंट एक बड़ा डायगोनल है. बस ठीक है. फिर निकालो बड़ा डायगोनल. जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएफ है ना, डीएफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डीएफ का वेक्टर क्या होगा? डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू फ्रॉम डी टू एफ, सो एफ माइनस डी. ओके, इट इज पॉइंट ऑफ एफ माइनस डी. सो एफ का कितना है? ए कॉमा ए माइनस, so it is ai plus aj plus ak cap. Understood? समझ में आ रही है बात? हेलो, ये समझ में आया? नहीं आया? आया? लिखो फिर. This is df. Okay, okay. And what is bh? चलो bh बोलो अच्छे बच्चों. x2 minus x1 फाइनल माइनस कितना होगा? bh starts from minus ai. bh starts from b, ends at h. minus ai plus aj minus ak. इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बोलो. ऑनलाइन पीपल. प्रियल, वेयर आर यू? So I'm having issues with the internet. Okay, now find the angle between bf and dh. Sorry, bh and df. Just do it. Find the angle between bh and df. पता है, तूने लिख लिया. निकाल. क्या? I have some issue with my iPad, which is I have changed some setting. If anyone knows how to operate an iPad, tell me later. Okay, every time it goes away. What setting I might have done?
Yeah, guys. Have you found out? Yeah. Yeah, I cap into A cap will be A square. Yeah. So will it be minus 1 by 3, cos inverse of minus 1 by 3? I feel so. I feel the same. That means the angle is cos theta I minus 1 by 3. What can you say about the angle? It'll be obtuse. Yes. निकालो निकालो -1 माइनस आएगा आएगा -1। अभी करो पहले तुम पहले ना आंसर निकालो कि cos थीटा इज -1/3। ये समझ में आया? पहले निकालो। आ गया -1/3। आ गया। हाँ उसके बाद बताऊंगा। So you can't find theta easily cos theta, but at least get cos theta -1/3. It looks like they are 90, no? Are you sure it's not 90? देखो ऊपर राइट साइड में आएगा -a² plus a² minus a². So it's becoming -a² on the right side, right? When you do dot product, you're getting -a². Yes or no? Hello, mute fellows. Your dot product -a² आ रहा है ना? Yes, sir. Right? And नहीं आ रहा. Dude, -ai dot ai is how much? Minus -a². Very good. Plus aj dot plus aj is plus a². Minus a dot minus ak dot plus ak is -a². So you're getting -a² net. क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट हो गया bh डॉट df, तो ये हो गया bh डॉट df इज इक्वल टू bh का मॉड इंटू df का मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब bh का वैल्यू bh डॉट df -a² आ रहा है ना, राइट लेफ्ट साइड आ रहा है? नहीं आया? आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आएगा। और bh का मैग्नीट्यूड कितना है? इफ समथिंग इज -ai प्लस aj प्लस ak, तो इसका मैग्नीट्यूड है a² प्लस a² प्लस a² का रूट, विच इज √3a², विच इज, हाँ भाई √3a, ये आएगा मैग्नीट्यूड। करके देखो, दूसरा मैग्नीट्यूड भी आएगा √3a इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? कॉस थीटा -1/3, तो देखो तुमको पता नहीं है, कूद जाओ, बिल्डिंग से कूद जाओ तुम। अब देखो, लिसन, बिकॉज दिस cos inverse value is not known by us, you use inverse calculator and cos inverse of -0.33 is, बताता हूं मैं, ठीक है? एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो तुमको सिर्फ -1/3 पे रुक जाना है, ठीक है? सिर्फ नोन वैल्यूज ही एग्जाम में आते हैं, अननोन वैल्यूज नहीं आते, ठीक है? -1/3 आएगा, पक्का -1/3 आ रहा है ना? दैट्स योर प्रॉब्लम मैन, इट्स पक्का -1/3। Just a minute, okay? Arc.
This is 109 degree 45. Theta is 109 degree 45.45 degrees. 109.45. Look, it looks 90, no? It's not. Okay. Why do I still feel it's 90? No, it's not. No. I mean, I feel so. Like, I mean, see, I feel like this is a. Oh, this is not a square. No, it's a rectangle. It's a rectangle. So if you see the cross section, it is a rectangle of side AA, right? See, these sides are AA, right? Root 2A, A root 2, right? So upside is A root 2. And when you find the diagonal of it, of course, the angle will be, you know, they're asking, यार पर एक्यूट होना चाहिए था ना फिर ये, क्योंकि ये एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा ना, ओ इन्होंने ये एंगल निकाला है, समझ में आना, ये छोटा वाला एंगल नहीं निकाला, राइट? हाँ, यस, तो ये एंगल निकाला है और ये एंगल इज 109 डिग्री। हाँ, दूसरा वाला 71 आएगा ना। हाँ, और समझ में आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल है। हाँ, ये रेक्टेंगल है, तो दीज लाइंस आर नॉट 90, और जितना ये रेक्टेंगल फैलता जाएगा उतना ही ये लाइंस और acute, मतलब 109 बढ़ेगा, 71 कम होगा। वेरी गुड। ओके, so do you guys मतलब have like understood how to find angle between two vectors? थोड़ा सा ना, I am showing you an animation of ए। हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ओ येलो, चुप हो जाओ अभी, सुनो, इधर देखो ऊपर, इधर देखो ऊपर, देखो ये वेक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे u है, ठीक है, u को मैं ऐसे कर देता हूँ, कितना कर दिया है, u कितना है अभी ग्राफ पे, देखो u कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कितने लेंथ बाद खत्म हो रहा है, 7 ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, दिख रहा है, देखो u डॉट वी क्या हो गया, 0 हो गया, ये देखो एंगल u डॉट वी का वैल्यू देखना, ये देखो, अगर u और v दोनों सेम लाइन में, सपोज u ना, u इज 7, ओके, एंड v कितना है 4, तो u डॉट v कितना है, इट्स जस्ट 7 into 4 into cos 0, okay, and now I'll try not to change the length of v, okay, which is not very possible because it's changing, but I'll try it, okay, nonetheless. I think it is still kind of 4. C, अच्छा 3.61 है ना, ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैनुअली एंटर होता है क्या? गिव मी 1 सेकंड, ओके, कुछ तो हो गया इसमें। Okay. Anyway, listen. I'll show you by this animation. See, if the angle is, you know, obtuse, the dot product is negative. Okay. The moment angle becomes 90, the dot product is. अरे देख, गलत सलत मत बोला कर। हाँ, ठीक है। Okay, we have written that if the angle is 90, the dot product is 0. Right? Is the opposite true? If the dot product is 0, can you say the angle is 90?
Yes, but you have to also understand that one of the vectors can also be 0. Yeah, if the vectors are not 0, then for sure the angle is 90. Okay. Dusra, see, why is dot product used? Dot product is basically used to, let's see, let's say if I don't give you the vectors itself, if I don't give you the vectors, u और v नहीं दूं मैं तुमको कितना है, but I tell you that dot product is positive. What can you say? Them is positive, right? Okay. And also understand एक concept था kinematics में concept ये था कि suppose नीचे वाले vector velocity vector है, ठीक है? क्या है? Velocity. U vector is velocity vector और v जो दूसरा vector है ये acceleration vector है, क्या है? Acceleration. In which of the motion, अगर ये ऐसा acceleration vector तो क्या होने वाला है मोशन में, बोलो? ऐसे स्ट्रेट लाइन में दोनों, हाँ? जीरो कैसे होगा? बस एक जो वेक्टर है ना, सुन मेरे फिर से सुन, u वेक्टर क्या है? वेलोसिटी है, और v वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन. अभी अगर ऐसे एक्सेलरेशन इसके लाइन में लगा हुआ है, कैसे अब कितना भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट लाइन में लगा है u के, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन, हाँ, व्हाट आर इक्वल? नहीं, तब होती है स्पीड इंक्रीज. क्या होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? ओके, देखो, स्पीड, विच वेक्टर इंक्रीजेस स्पीड और वेलोसिटी? हाँ, v vector does not increase speed. V vector is the vector for speed. I am asking which vector increases speed. Which physical quantity is responsible for increasing velocity? Acceleration, right? Acceleration vector increases or decreases speed? Both it can do. If acceleration is in the direction of speed, it will. थोड़ा पानी पिलाओ मुझे, बकवास इतने देर से कर रहे हो ना, दिमाग गर्म कर दिया एकदम. If acceleration is in the direction of velocity, क्या होता है? Speed increases ना, तो क्या decrease बोल रहा था? Decrease बोला था ना? हाँ, झूठे नंबर 1. भाई सब कॉमन सेंस है, अगर acceleration is in the direction of velocity, the speed will. बैठ जाओ, मैं रखने में. हाँ, लिखो, if acceleration is in the same direction of velocity, speed. लिखो लिखो. फिर लिखो, if acceleration is in the opposite direction of velocity. हाँ, क्या बोला? Yes, retardation. Okay. Now you know this from kinematics, right? Now you write, if acceleration is making an acute angle with velocity. If acceleration is making an acute angle with velocity, the speed will increase. Little less compared to when it was at pura line. So if acceleration is making an acute angle with velocity, vector speed will increase. Okay. If acceleration is making an obtuse angle with the velocity vector, speed will decrease. Yes. Now write, very important case. What if acceleration is perpendicular to velocity? Constant speed, my friend. Constant speed. Yeah. पहले तो देखो, फिर से बोल देता हूँ. When acceleration is acute with respect to velocity, speed increases. When acceleration is obtuse with respect to velocity, speed decreases. When acceleration is perpendicular to velocity, तब क्या होता है?
क्या constant? Constant speed, but what changes? Velocity changes. It changes direction only. Magnitude will be same. It changes direction only. और ये कौन सा केस, कौन सा मोशन था ये हमने पढ़ा है? Yes, it is uniform circular motion. It was uniform circular motion. They were A was always perpendicular to velocity. In which direction was acceleration? Towards the center. Towards the center. In which direction was the velocity? Tangent. Very good. Good, so हम good. ठीक है? डॉट प्रोडक्ट हो गया? ठीक. अब लिखो concept work done or work done is force dot displacement. Work done is force dot displacement. Work is scalar. Work is scalar. Force and displacement are vector. Yes, man. Displacement is vector. First line kinematics. Displacement is vector. Distance is scalar. तो देखो उसको पूछा डिस्प्लेसमेंट व्हाई इज इट वेक्टर, बोल रहा है बिकॉज़ वेलोसिटी इज it's the other way around. Because displacement is vector, that's why velocity is a vector. Velocity is not the absolute quantity. Displacement is the absolute quantity, more basic quantity. Okay. By the way, do you know what is the differentiation of velocity? Velocity is what? Acceleration, no? What is the differentiation of acceleration? What is it called? dA by dt. You have never heard of it, no? But you do know what it's called. What are you? What are you? Harshal? A jerk. It's called jerk. What? Differentiation of acceleration with respect to time is called dA by dt is called jerk. It's a pretty useless quantity. हाँ सही में jerk बोलते हैं, फिजिक्स में jerk बोलते हैं भाई, इसका फिजिकल वर्ड है. यस, जैसे फोर्स है ना फिजिक्स में, वैसे jerk भी है फिजिक्स में. ओके, इट्स नॉट जस्ट इन रियल लाइफ रनिंग क्लासेस. ओके, अब देखो, अभी सुनो, समझो, एग्जांपल लिखो फोर्स का. अब ओके, सो एग्जांपल लिखो. सोहम इज कैरिंग अ वेट over his head and walking. Soham is carrying a weight over his head and walking horizontally. एक सोहम बना दो, stick figure, carrying a weight on his head and going to the right on ground. Okay. Now on the weight, you should be able to draw forces. Aditi, do you know how to draw forces? FBD. Yeah, gravitation, normal. Downwards. Okay. Yeah, and yeah, And what? एक और force है ना? gravitation, normal, and what is that? No, the force given by the other mass The person. person. Yeah. Force given by the person. It is in which direction? In this case, upwards. In this case upwards, and let's call it R. Let's call it, क्या हो गया? बना रहे, दिखाओ नोटबुक, दिखाओ दूर से, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r. ये बनाया है ना? rm जो बोलना है बोल लो, ठीक है? हाँ, हेड से ऊपर रखा है, तो जो हेड उसको ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, दैट इज कॉल्ड r और m, जो भी तुमने बोलना है, रिएक्शन फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन. ठीक है? क्या ब्लॉक इज मूविंग इन वर्टिकली? नो. सो न्यूमेरिकली R is equal to mg लिखो. देखो, अब लिखो, when you want to find work, you always find either work done by a particular force or total work done by all forces. ठीक है, लिखो, you always find work done by a particular force or work net which is all work done by all force. पूरा लिख, work done by all particular force or work done by all forces. ठीक है?
ठीक है. Also write displacement is independent of the force. ठीक है, displacement is independent of the force. ठीक है. ठीक है, की तरफ हर्षद तुम भी आओ. द फोर्स, जल्दी उठो जल्दी उठो. फोर्स. ठीक है, अभी मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, 1 and 2, one is yellow, one is white. और इधर yellow is visible, white is not visible. या ठीक है, अब क्या करना है, देखो लड़ाई नहीं करनी है. ठीक है, लेकिन हाँ नहीं नहीं, नॉट ईच अदर मैन, ऐसे नहीं. पुश हिम. हाँ, गिराना मत. यू आर नॉट एबल टू पुश हिम. नो, If I push harder, he has to move. हाँ, ठीक है. Whether he moves or not, was it a function of your force only? Is also. There are other forces involved. retarding. Wait, ये मैं सोचूं कि उसका है कि नहीं. हो सकता है कि उसको उसने पकड़, तुम उसको हाथ लगा दो, ऐसे हाथ लगा दो, अब धक्का दो. You are not. She's talking. Yeah. Keep pushing. Okay. You देखो, तुमको क्या पता, you are applying force. वो मूव नहीं हो रहा. हो सकता है कि वो खुद के फोर्स से मूव नहीं हो रहा है, कि हो सकता है उसको किसी ने पकड़ रखा है, हो सकता है ग्राउंड में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, हो सकता है ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तुम नहीं ठीक है, नहीं हिला पा रहे हो. तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू आर अप्लाई. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे इंडिया में इंडिपेंडेंट है, तुम्हारा कुछ तो फैक्टर है. ठीक है, अगर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड होता, कुछ नहीं होता, ये इस पे दम नहीं होती, तो फेंकते चला जाता ना. ये समझ में आया. तो योर फोर्स could have caused displacement, but it is not necessary that your force will cause displacement. भाई अच्छा, अब दूसरी क्वेश्चन है, इस आदमी जो खड़ा है ये वाइट बॉडी, इस पे कितने कितने अभी टोटल फोर्स लग रहे हैं? 2. कौन कौन से? mg डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है अभी? नहीं. अगर डिस्प्लेस हो भी रहा हो, मान लो ये वर्क कर रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? mg forces which direction? Downward. His displacement is which direction? Down जा रहा है. वॉक करते जरा वॉक करते देखते डाउन जाता है. कौन सा भूत है तू जो डाउन जाएगा? His displacement is horizontal, basically at 90 degree to the mg. So what is work done by mg? 0. What is work done by normal? 0. If he says rest, तो सोचना ही नहीं है, work done by anything is 0, because it is displacement is 0. लेकिन अगर ये वॉक कर रहा है तो तुमको देखना है कि which force are you acting work off. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने धक्का दिया, धक्का दो, ये मूव हो जाएगा, मूव हो जाना इस बार. ठीक है, मैं मारूंगा. ठीक. अब वर्क डन बाय यू कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? व्हाई? You pushed it. No, not because you pushed him, because he moved also that way, not just because you pushed him. ठीक है, वर्क डन बाय यू पॉजिटिव हो गया. व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? 0. व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल? 0. अब you push him, you don't move. Work done by gravity, work done by normal, work done by you, work done by friction, 0. समझ में आ गया? What is the net work done? 0. समझ में आ गया? Everyone got it? जय पुश करो ना, तुम वॉल को पुश करो, वही होगा ना जो बोल रहा है. He is asking if Jay pushes, the yellow person pushes, then yellow person only moves backwards. I mean, someone's putting force on this side. That means he is also putting force. Basically, he is providing a normal reaction. Basically, he is a wall. You are a wall. Yes. Not in David sense, in a bad sense. ठीक है, तुम उसको पुश करो और पीछे चले जाओ. बैठ जाओ. थैंक यू. तो द कॉन्सेप्ट इज, क्या गिरा दिया भाई? ओके,
So always whenever you are, if nothing is given, find the work done by this force particularly, it is assumed that you are being asked net work done. अगर पूछा नहीं है कि किस फोर्स का है तो क्या निकालना है, नेटवर्क का. अगर पर्टिकुलरली पूछ लिया है तो बस वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, समझ में आ गया, एकदम इजी है ना. ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. सपोज yeah, suppose you are pulling out water from a well, pulling out water from a well, and you are pulling water up. So the on the bucket, how many forces are there? Two. Which forces? Very good. Tension upwards, mg downwards. Okay, the work done by tension is positive or negative? Very good. Work done by gravity is very good. Understood, no? Now you are taking the bucket downwards. Tension will not be negative. Wait, tension negative. Work done by tension is negative, and work done by gravity is, yeah. So okay. Now one important thing. See, important thing. ये जल्दी से एक बार लिख लो, बना लो एक डायग्राम बना के इसमें ये लिख लो. Have you? ठीक है, अब लिखो. See, if you are saying that the we talk of case of when you're pulling the bucket up, the displacement is in which direction? Pulling the bucket upwards. So displacement is in positive or negative? Positive. So why are you saying it is positive? So why are you saying up is positive? Because according to the graph concept. FBD नहीं है, FBD नहीं है तो FBD नहीं है ये भी तक, भी काइनेमेटिक्स में हूँ मैं. सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों ले रहे हो? तो क्या हुआ, ग्रेविटी ऊपर लगेगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर डायरेक्शन हो जाएगा. तभी ग्रेविटी ऊपर भी लग सकती है ना, कहीं कहीं पे होता है. No bro, the basic reason is because your Cartesian system में you have taken assumption that anything which goes to the right is positive, anything which goes up is positive. वो Cartesian system है. बोला था, but तूने ग्राफ बोला था, की बात नहीं होती. ठीक है, ठीक. तो this is an assumption that because the up direction is positive, displacement is positive, right? है ना? Yes or no? We can also take an assumption that the down direction is positive. हम करते हैं, for example किसमें करते हैं, जब when you throw a projectile from a height, हम डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं. अगर डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर जाती हुई बकेट का डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. अंडरस्टूड? नेगेटिव है ना, राइट? और टेंशन का फोर्स तब भी ऊपर है, टेंशन का फोर्स ऊपर ही लग रहा है ना,
तो टेंशन एज टेंशन का डायरेक्शन मतलब टेंशन एज साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, राइट। बट फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तुम टेंशन टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? तो ये जो वर्क डन इज एफ डॉट डी एस पॉजिटिव आता है, वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट, दैट मीन्स द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर इन द सेम डायरेक्शन. It doesn't matter which direction you have taken, positive or negative. That direction could be positive, that direction could be negative. It only means that they are in the same direction. And if work done negative आया तो they were in different or opposite side kind of direction. Okay ना? Understood? ठीक है. Cool. अच्छा एक बात बताओ, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही है, किसमें जा रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर. सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होता है, टेंजेंशियल होता है. क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है? सो व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, लिख लो इसको. इन यूसीएम वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 ऑलवेज. फाइन एवरीवन. अब एक काम करते हैं, okay, if you want to find work done by force and force and displacement are given, you can find out, no? How will you do? F वेक्टर दिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया, तो कैसे करोगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ना निकाल लोगे ना. चलो क्वेश्चन भेज रहा हूँ, करो. The camera is really bad. I do it from iPad. I have sent, if you can read, you can do it. Chat. I have sent it in the Zoom chat also, okay, for those who are not in the group, have joined new. Can you see, Aditi? Yeah. अरे स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट. स्टार्टिंग इज विनिंग हाफ द बैटल. तुम तो इधर देखो तो, रेड येलो व्हाइट, ए रेड येलो व्हाइट, इधर देखो, इधर 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 इज स्क्रीन, इधर इधर ये इधर, स्माइल कर दो. कहाँ पे? सो हम फिर से बोलो. डिस्प्लेसमेंट इज वो वेक्टर कहाँ से कहाँ गया है, इनिशियल टू फाइनल, नो, फाइनल माइनस इनिशियल. वो बेटा फोन ना चला, नहीं करेगी रिप्लाई.
या बिग डॉट प्रोडक्ट, बट आर निकाल के, आर दिया नहीं है डायरेक्टली। आर दिया नहीं, पता है ना, आर को निकालना है। आर यू हैव टू फाइंड बाय डूइंग फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज लाइक 2 i cap minus 1 i cap. Okay, yeah, that is one. Initial displacement is 1i plus 4j plus 6k, final is 2i plus 3j minus 4k, so you have to subtract final minus initial to get the displacement. The final displacement will come as I cap minus j cap minus 9k cap minus, sorry, minus 10k cap. Are you getting the final displacement as I cap minus j cap minus 10k cap? उसमें थोड़ा सा ना गलती है, उसमें 1 कॉमा, एक को कॉमा में दिया, एक को आई में दिया, के कैप में दिया है, दोनों को एक में कर देना चाहिए, या दोनों को कॉमा में दे दो या दोनों को कैप में दे दो। हाँ नहीं है तो दोनों, फिर तो दूसरा भी फर्स्ट टर्म वेक्टर नहीं है, बट जीरो कनेक्ट, द वेक्टर कनेक्ट फ्रॉम जीरो टू दैट पॉइंट इज अ वेक्टर है, वही अज्यूम करते हैं, ठीक है। Where is it? -2. You don't, one second, -2, I'll just check, okay, you do the second, okay, बेटा आर वेक्टर कितना आया, प्लस 2 नहीं है ब्रो, you are having -4 -6 bro, that is silly mistake you are doing, silly mistakers. I will I will label this photograph as silly mistakers. So what is the answer for the first, guys? Yeah, -2 is correct, Aditi. Second में ध्यान रखना, the force is like this, okay? So if the block is like this, kept horizontal of the ground, the force is like this. Force is like this, okay? Like inclined at an angle. Cos 45. You have to resolve the force. Work done is Newton, yeah. Work done is in Joule more, Joule. For the, मैं बताता हूँ, 2 मिनट बताता हूँ, ठीक है।
Hmm? We'll keep your video on. Real.